Hello beautiful people, this is Ashwika and welcome back to my channel. So in this video I'm going to share how I edit my Instagram pictures using Lightroom. जैसे आप लोग अपनी पिक्चर्स को एडिट करते हो मैं भी वैसे ही एडिट करती हूँ. मुझे जो अच्छा लगता है मेरी पिक्चर के अकॉर्डिंग मैं वही एडिटिंग करती हूँ. एंड सेकेंड चीज़, जो हम पिक्चर चूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए राइट, तो उसमें जो बैकग्राउंड होता है, उसमें जो कलर्स होते हैं, उसमें जो लाइटिंग होती है, हम उसे एनहांस करते हैं, हम उसे ब्राइटन अप करते हैं और यू कैन से हम उसे हाईलाइट करते हैं जिससे कि हमारी नॉर्मल पिक्चर थोड़ी और अच्छी हो जाए. सो या दैट्स इट. बट बिफोर वी स्टार्ट, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल और यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, like this video, comment down, and that's it. So yeah, let's get started with the video. ओके सो इस पिक्चर में जो लाइटिंग्स हैं, कलर्स हैं, हम उसे एनहांस करने वाले हैं और यू कैन से हम उसे हाईलाइट करने वाले हैं जिससे कि इस पिक्चर में थोड़ी और डेफिनेशन आ जाए. एंड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर पिक्चर में लाइटिंग्स एंड कलर टोन्स डिफ़र करते हैं, सो वी नीड टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली. ऑल राइट, सो ओपन द लाइटरूम ऐप. फर्स्टली वी विल चेंज द लाइटिंग्स ऑफ द पिक्चर, सो वी विल क्लिक ऑन द लाइट टैब. अब इसमें फर्स्ट वी हैव एक्सपोजर. सो बेसिकली एक्सपोजर विल ब्रिंग लाइट टू द पिक्चर. और अगर आपकी पिक्चर में आपको लग रहा है कि डल है या फिर अंधेरा है, डार्क है, सो यू कैन ऐड द एक्सपोजर. बट फॉर दिस पर्टिकुलर पिक्चर आई एम कीपिंग इट एट 0 cause इसमें आई डोंट वांट मोर ब्राइटनेस. आई एम एडिंग सम कॉन्ट्रास्ट कॉज अगर देखो मैं कम कर रही हूँ तो कलर्स फेड हो रहे हैं और डल डल सा लग रहा है, बट वही बढ़ाने पर कलर्स एनहेंस हो रहे हैं. देन वी हैव हाइलाइट्स. अब मैं हाइलाइट्स कम कर रही हूँ तब भी मेरे को अच्छा लग रहा है, इंक्रीज़ करने पर भी अच्छा लग रहा है. सो ऐसे ही मैं एडिट करती हूँ एंड फिर जो बेस्ट लगता है आई डू दैट. सो इसमें आई कीप इट एट 15. Now shadows, so basically it will take out the shadow especially from the face, and also I will share a bonus tip, so keep on watching. And for this picture I'm keeping the shadows at -64. Then I'm decreasing whites as well as black, and as the name suggests, whites will gonna increase the brightness in the picture. And for this I will keep the whites at -21 and blacks at -38. Here we are done with the lighting part, and now we are going to enhance the colors. In this, first we have temperature and tint. उसमें भी we have two more options, cool and warm. So basically if आप blue की तरफ जाओगे, I mean left की तरफ, तो ये cool tone देगा, and yellow की तरफ तो warm tone. And I am decreasing a little bit, like at -1 only. And for tint again we have two options, green tone and pink tone. मैं थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ, like just to add a little bit of pinkish tone, and at 4 only. Then I'm raising vibrance because if मैं कम करूँगी तो as you can see colors fade हो रहे हैं, so which I don't want in this picture. And for saturation I'm keeping it at 0. Now open the color mix option, in which you will see 8 different colors plus 3 more options in every color. First is hue, second saturation, and third is luminance. And you can change the colors by increasing and decreasing the value. For example, first one is red. अब अगर आपकी पिक्चर में रेड कलर है, like for example इस पिक्चर में है, so you will use it, otherwise नहीं. सो डिक्रीज़ करने पे ये पिंकिश टोन हो रहा है एंड इंक्रीज़ पे ऑरेंजिश. सो मैं यू का अमाउंट कम कर रही हूँ एंड कीपिंग इट एट -27. एंड फॉर सैचुरेशन मैं इसे बढ़ा रही हूँ. एंड बेसिकली luminance is the brightness of a color. You can make colors look more brighter, and I'm keeping the luminance at -11. एंड फॉर ऑरेंज मैं यूँ थोड़ा कम कर रही हूँ एट -8. एंड सैचुरेशन थोड़ी बढ़ा रही हूँ, लाइक एट 4. एंड ल्यूमिनेंस कम कर रही हूँ एंड कीपिंग इट एट -5.
Then I'm going to blue and I am decreasing the three of them, hue, saturation and luminance, to change the blue color, and hue at -14, saturation at -11 and luminance at -20. And for rest I'm not doing anything, keeping all of them at 0. So now let's move on to the effects option. So whenever I edit any picture, I always make sure to increase the amount of texture as well as clarity. So इस picture में भी मैं वही कर रही हूँ, and keeping the texture at 16 and clarity at 15. नेक्स्ट वन इज़ dehaze. मैं बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा कम इसे बढ़ा रही हूँ, at 1 only. देन वी हैव vignette, जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ बिकॉज अगेन पिक टू पिक वेरी करता है. द लास्ट वन इज़ डिटेलिंग. शार्प, इसमें मैं शार्पनेस थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ जस्ट टू इम्प्रूव द शार्पनेस ऑफ द पिक्चर अ लिटिल बिट, एंड या एट 4. एंड या दैट्स इट, वी आर गुड टू गो. Hold the picture for few seconds and you can see the difference like before and after wala. So basically no particular number, you just have to play around and see what works best. एंड कोई रूल नहीं होता एडिटिंग का, जो आपको अच्छा लग रहा है बस वही करो. और अगर कोई फंक्शन नहीं पता कि उसे कैसे यूज़ करना है, कैसे पिक्चर में यूज़ करना है, तो सिंपली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर कर देख लो, या फिर प्लस और माइनस कर कर देख लो, और फिर जो जैसा आपको अच्छा लगता है पिक के अकॉर्डिंग बस फिर वही करो, एंड दैट्स इट. टैप दिस टू सेव योर पिक्चर इन योर गैलरी. ओके, सो नाउ द बोनस पॉइंट इज़ ये तो अभी अपन ने देखा कि कोई नॉर्मल पिक्चर है एंड उसको अपन कैसे एडिट कर सकते हैं. बट जब कोई ऐसी पिक्चर होती है जिसमें बिल्कुल भी लाइटिंग्स नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में वो अपन ने पिक्चर क्लिक करी हुई होती है, और काफ़ी ज़्यादा डलनेस, और काफ़ी उसमें बिल्कुल भी लाइटिंग्स नहीं है, बिल्कुल भी लाइटिंग्स नहीं होती, तो हम उस पिक्चर को कैसे सही करें. सो लाइटरूम में ही वी हैव 3 ऑप्शंस: एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट एंड शैडोज़. आप तीनों का अमाउंट इंक्रीज़ कर दो अकॉर्डिंग टू योर पिक्चर, एंड जब आप तीनों का अमाउंट इंक्रीज़ कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपकी पिक्चर में वो डार्कनेस से उसमें लाइटिंग्स ऐड हो जाएंगी. सो या दैट्स हाउ यू कैन चेंज इट, एंड या जस्ट प्ले विद कलर्स. एंड या दैट्स it for today's video. I hope you all liked it, and if you liked it, don't forget to subscribe to my channel, like this video and share this video with friends. And yeah, that's it, we'll see you in my next video. Till then, bye.